हाँ तो इंडियन से नहीं करता अरे नो वेरी वेल पाकिस्तानी से मालूम आप बकरा भी खाते हैं जल्दी कन्वर्जन ये ऐसा थोड़ी होता है तेलुगु में नहीं कर रहे हैं पर ऐसे करना पड़ेगा अभी तो सूरज का दबाव तो नहीं डाल सकता कितना बोला ये लोग ये ऐसा एक्सपेक्ट वाले तो कैसे ना पर नहीं तो मतलब रिलीजन है कैसा है बॉडी वाइज सिक्स पैक है चीज कर वो तो हो गई जॉर्डन दिन फिर का आदत का अरे शाम को यदि भी जॉर्डन वैसे फिर आदत काट सकते हैं हाँ हम तो लोग अगर हम सब चाहिए तारीख के डबल चेक किए facts double check facts Five. so far facts जब facts बोला तुम facts तो नहीं है बिल्कुल facts तो नहीं है मैं बता दो facts बोले facts जरूर facts तो नहीं है facts पता नहीं क्या चल रहा है तेरे को facts क्यों आ गया उसको ऐड ये तो तेरे में ही प्रॉब्लम हो रही है हाँ प्लीज तू तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं Are you all right? We all come on now. क्या किया फिर उससे वो पानी की गर्म मैं सो रहा था नहीं गाने में नहीं ओए ओवर यूनिवर्सिटी में मचे आपका वो कभी आइसक्रीम जाता है ना फील कभी ऐसा पावर चलो ये बच्चों ने ओए मौत के मैच करेंगे ये को कॉन्फ्रेंस एक बैठना दूसरी क्या एक सेपरेट सर सरप्राइज में भी दे दो पेन ड्राइव में अरे लेट्स गो सर कैंसिल स्टडी नॉट इशू ओके अपने लास्ट क्या कंप्लीट किया था एड्रिनल हो गया था पैनक्रियास पैनक्रियास हो गया था सर ये आपने मांग करवाया पैनक्रियास हो गया पूरा यहाँ से चालू करना है थायराइड क्या इधर से क्या एक इस पे आधा नहीं होता पूरा ही होगा अब
मैम ने मुझे जब मस्त सिलेबस हो गया सब हाँ सर एग्जाम का जो स्कूल का सिलेबस है आप हो गया हाँ वो बस लास्ट है मेरा हो गया मैं टर्म का बोल रहा हूँ फर्स्ट टर्म फर्स्ट सेमेस्टर बस समझ यूनिट टेस्ट होगा ठीक है we move on to next part Christ मैं भी टाइम टेबल यूज किया तो सुनना बोल रहा है बाद नेक्स्ट एग्जाम में जेनेटिक्स भी इंक्लूडेड होगा तेरा डिप्लोमा हुआ नहीं सर ओके अभी स्टार्ट इसके बाद स्टार्ट करना है इसके बाद नहीं इसके बाद इसे बात करते हैं मतलब आपने कहा था ना कि जैसे लास्ट में अभी का अगर एग्जाम होगा तो मुझे करना ही पड़ेगा सेकंड यूनिट में अभी टाइम तो है कि फर्स्ट यूनिट खत्म नहीं हुआ अभी okay we go on to the next part that is thyroid okay thyroid gland now where is thyroid gland present neck एडम साहब अरे ये ऐसा होता है ना एग्जाम में लिखेगा सर ऐसा होता ना good the thyroid gland is present in front of the neck below just below the larynx okay so if we just write it is present in the neck so neck पे ये पूरा हो जाता है so it is not specific so what is specific it is in the front of the neck just below the larynx is what thyroid gland is present it's also referred as a butterfly gland because it's made up of two lobe-like structures. Normally, butterfly की तरह होता है. Okay, and in between there is a connection that is known as isthmus. So, isthmus is the connecting bridge between the two lobes of the thyroid gland. क्या होगा? सर मैं कहती हूँ इसका वो भी से अच्छा वो इसका वो ऐसा तेरी पार्ट बता दे. एब्सेंट So, I think the isthmus is nothing but a connecting link between the two lobes of the thyroid gland. Now, thyroid gland is a very important gland of our body because it secretes two hormones. The two hormones are thyroxine and calcitonin. We do not have calcitonin in the syllabus. Tell me. सिर्फ thyroxine पढ़ना है calcitonin just regulates calcium and phosphorus in our body but thyroxine is an hormone which is very much important for the functioning of the entire body it is this hormone which controls or regulates the metabolism of your body so the carbohydrate protein lipids हमने ये पढ़ा था even in the adrenal gland क्या mineralocorticoids and glucocorticoids glucocorticoid regulate the carbohydrate protein and lipid metabolism पर ये भी वही कर रहा है but major function is brought about by thyroxine gland okay now thyroxine chemically is referred as T3 T4 hormone ये नहीं है शायद this is only for knowledge part because इसका काम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने को आएगा ही है सो व्हाट इज दैट T3 T4 हार्मोन घर पे कोई थायराइड पेशेंट है घर पे कोई ब्लड टेस्ट करने गए होंगे तो अगर उनका ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट दिखेगा जहाँ पे वो डॉक्टर मार्क करके देते हैं कि आपको ये टेस्ट करना है तो अगर वो पेपर आपने कभी देखा होगा तो उसमें आपको ये दिखाई देगा T3 T4/TSH डॉक्टर टिक करने का ये आपको टेस्ट करना है So what does that T3 T4 stands? T3 stands for triiodothyronine, tetraiodothyronine. So triiodothyroxine भी बोलते हैं, tetraiodothyroxine भी बोलते हैं. Okay? So what it means is 3 molecules of iodine or 4 molecules of iodine are required for the formation of thyroxine. So iodine is a precursor
What is precursor? Precursor means the initial ingredient which is required for formation. Like पाव भाजी में पाव चाहिए भाई चाहिए, बिना उसके पाव भाजी बन नहीं, something like that. क्या बिना आयोडीन के थायरॉक्सिन नहीं बनता? So it's a precursor for the thyroxine to be formed. Now, based upon this, the doctor advises us to take iodine, okay, because without iodine, thyroxine would not be. How do we get iodine? From salt, iodized salt. Now, if iodine deficiency is seen, then the patient may undergo a condition known as simple goiter. Why simple goiter? What happens in goiter? Swelling of the thyroid gland takes place due to the deficiency of iodine. Okay? Which geographical area in India are mostly affected with this condition? Himachal. Or kuch? Northern या northeastern? Okay, northeast part is more commonly. So this part, you see what we say northeast, is why are they affected? Because they are very much away from the mean sea level, or they are very much far off from the coast. So that is why there are more chances of them getting affected. So in order to avoid this, the government has introduced iodine into the salt itself. So iodized salt. Am I clear? Okay. Now, if from today, next 20 years, okay, I give you food which is without iodized salt. Iodine nahi hai salt. It's a plain salt. Will we be affected with this? No. We will never be affected with it. Chances would be very, very less. Reason? Because we are next to the sea. The soil has ample amount of salt water, which is a very good source of iodine. If, and on that contrary, if you are eating the marine fish खाते होंगे तो भर के iodine. So that is why we are very rarely affected with iodine. So simple goiter symptom is swelling of the neck region. Now, deficiency of thyroxine. Or actually, not again mentioned here. Thyroxine is the only hormone in your body which is stored initially. अपन ने starting में पढ़ा था. Hormone can neither be stored nor it can be the urine. It's just excreted out. The thyroxine बनने के पहला colloidal form होता है, which is stored in the thyroid के globules के अंदर. Once come out, it will never be stored. So बाकी hormones में सब property नहीं जो सिर्फ thyroxine में मिलता है. So thyroxine deficiencies lead to one we study as hypersecretion and one we study as hyposecretion. So hypersecretion में पहला condition है simple goiter. Second condition cretinism. Third condition myxedema. So we go one by one to understand. Then simple goiter, we just now said, it is because of the swelling of the thyroid gland due to the deficiency of iodine. Then please try to understand the difference. Iodine की कमी है, इसके लिए thyroxine नहीं बना. Thyroxine नहीं बना, इसके लिए इफेक्ट होगा. Okay? पर इनमें thyroxine नहीं बनता ऐसा नहीं. They can produce thyroxine if iodine is given to them. Okay? बाकियों में thyroxine का प्रॉब्लम, iodine का नहीं. Okay? So you need to understand that क्या. Iodine की कमी है, इसके लिए thyroid का कमी, thyroxine की कमी. इनमें
भले आयोडीन हो तभी थायरॉक्सिन की कमी है. So here body is not able to utilize iodine to form thyroxine. So that is what we say as simple goiter. डायग्रामेटिक क्वेश्चन ही पूछा गया है. मतलब अब तक जितने बार भी पूछा गया इसके ऊपर दे आर गिवन यू डायग्राम ऑफ द image whatever and then they said identify the condition given in the above diagram, name the gland or which hormone is created into this condition and name the gland is. So simple goiter, deficiency of iodine, thyroxine deficiency, which is that is less secretion of thyroxine. Cretinism occurs in, keyword is अगर थायरॉक्सिन की कमी बच्चों में है then the condition is known as cretinism. Now what are the symptoms of cretinism? The child is जो बोना है किस और हार्मोन में दिखाई देता है? पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन. तो ग्रोथ हार्मोन में वो चाइल्ड ड्वार्फ है बट इज नॉर्मल लाइक यू एंड मी. समझा? मतलब मेंटली वो हम जैसा है पर इन कंडीशन में ही इज ड्वार्फ एट द सेम टाइम मेंटली रिटार्डेड. अच्छा इसमें मेंटली रिटार्डेड. तो इनमें ग्रोथ भी नहीं हो रहा है और मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है. दैट इज वेयर cretinism is. Okay? Myxedema. Myxedema is a condition occurring in adults. Now what happens in this? मेरे में अगर ये हुआ तो मेरी हाइट अभी कम नहीं होने वाली है, मेंटल डाइट पे अफेक्ट नहीं होने वाला है. So I would be showing a sluggish type of body. There would be swelling on my face, hands and leg. मतलब आपके पूरे बॉडी के ऊपर स्पेसिफिकली फेस और हेड्स के ऊपर पफिनेस दिखाई देता है. अपन not have seen it, but बहुत सारे जिनको किडनी का इशू होता है या ब्लड प्रेशर का इशू होता है ज्यादा, तो when they get up early in the morning ऐसा फेस सूजा होता है या हाथ पैर सूजे होते हैं. As the day progresses वो नॉर्मल पे आ जाते हैं पर इनिशियली पे ये दिखाई देता है. इनमें ये कंटिन्यू दिखाई देगा. That's the sluggishness. मतलब कुछ भी काम करने बोलो तो ये आराम से आज की मदद करें बिकॉज एनर्जी का कमी होनी है. Sluggishness is seen. There is swelling of puffiness on the face as well as on the hands and on the legs. That is what we say as myxedema. Then the word itself, edema, okay, is nothing but body fluid retention. इसे अपन swelling करते हैं. Okay, लगा तो swell हुआ, पर अगर लगा ही नहीं और swell हुआ तो अपन बोलते हैं body का fluid retention. That is known as myxedema. Am I clear? So edema is a biological term for swelling. समझ में? Water retention ना, swelling लगा हुआ नहीं, सिर्फ पानी retention हुआ है इसके. समझ में आया सबको? I think children that's about your 3 parts. उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है is in terms of over secretion. एक ही condition है exophthalmic goiter. Ophthalmic goiter. Okay. Now, what is exophthalmic goiter? क्या दिया हुआ है? चल, ophthalmic कहाँ पे वर्ड सुना है? हार्ट तो लगा है स्पेक्स और नहीं बोल रहा. तो क्या कसाई के पास गया था नंबर निकालने के लिए, कार्डियोलॉजिस्ट के पास. Okay, then ophthalmologist, the doctor concerned with your eyes. So exo बाहर, ophthalmic आँख ऐसे बाहर निकल गया. बाहर मतलब
विजुअली ऐसा बाहर नहीं आता है, पर जैसा इसका पिक्चर दिखाई देता है आंखों का, क्या दिखाई दे रहा है, मैंने ऐसा बोला नहीं कि ये है, ओके, साउथ इंडियन हो, पता चला सर ने डिस्कवर कर दिया। मोस्टली साउथ इंडियन का वो आंखों का फीचर्स भी है, ओके। देन द आईज आर लाइक दिस, ऐसा आंख ऐसा ऐसा क्या, अब भी अपन जब मम्मी डैडी गुस्से से दिखते हैं और बात होता है, अब गुस्से से बाहर निकलने वाला है, वैसे ही इन बंदों में दिखाई देता है। सो एंड ऑब्वियसली देयर इज स्वेलिंग ऑफ द नेक। सो सिर्फ स्वेलिंग है तो सिंपल है, पर स्वेलिंग है एट द सेम टाइम द आईज प्रोट्रूड आउट, टेक्निकली नॉट आउट, जस्ट इट लाइक गुस्से से बाहर है, बटन की तरह बाहर आ गया। So then that condition is known as exophthalmic goiter. Am I clear? Yes. Okay. So then, किसी ने बुक नहीं लाया? Just 1 second. सर We just read the part given in the book. Thyroxine is a bilobe butterfly-shaped structure situated in the front of the neck, just below the larynx. The two lobes are joined by narrow isthmus. It secretes two hormones, thyroxine and calcitonin. Calcitonin not in the syllabus. Thyroxine regulates basal metabolism, that is cellular oxidation resulting into heat production at rest. Okay. An increase in secretion increases metabolism, and decrease in secretion lowers it. It also improves the general growth of the body, ossification of bones, body temperature, mental development, etc. 90% ये ज्यादा तक फीमेल्स को अफेक्ट करता है, थायरॉक्सिन आफ्टर प्रेगनेंसी। बहुत बार तो आपने देखा होगा, बहुत बार ऐसे मम्मी अपने पुराने फोटो देखती रहती है और बोलते तू पैदा होगी और मेरे उसके बाद ऐसा मोटी हो गया ना, मतलब मेजॉरिटी पॉइंट क्या वुमेन में सडनली वेट बढ़, प्रेगनेंसी के टाइम तो वेट बढ़ेगा ही ऑब्वियसली, पर उसके बाद भी बहुत सारे वेट डिक्रीज हो जाते हैं, पर उसके बाद परसिस्टेंटली वेट बढ़ रहा है एंड द मॉम जो पहले तो स्लिम ट्रिम थी अब ऐसा, उसका एक रीजन थायरॉक्सिन अफेक्ट होता है एंड मेजरली ये प्रेगनेंसी के टाइम करवा है। सो मॉम को ऐसा बुरा लगता है, मैं शादी के पहले कितनी अच्छी खूबसूरत थी और तुम पैदा हो गए नहीं और मेरे क्या पोस्ट चाइल्ड बर्थ, उसके बाद अदर हार्मोन्स आल्सो गेट डिसबैलेंस, उसके वैसे ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बट अगेन डिपेंड्स कि आप कितना उसके ऊपर वर्कआउट करते हो एंड देन यू ट्राई टू मेंटेन, सम ऑफ देम डू बट सम ऑफ देम मे नॉट हैव। ओके, देन उन्होंने लिखा हुआ है इज अंडर सिक्रीशन हाइपोथायरॉयडिज्म, उसमें दिया है गिवन सिंपल goiter, cretinism and maxedema. So simple goiter, enlargement of thyroid and is visible as swelling in the neck. This is due to the insufficient quantity of iron in the food. This condition is common of the people living in hilly areas where iron is deficient in soil and hence the food grown there. Then in the hilly areas, एक तो north eastern है या anywhere the hilly areas which are away from the sea coast. Then comes thyroid deficiency or common, वहाँ पे green box दिया हुआ है, that is normally asked for give reason, तो आप अपने मार्क लिखिए। Then cretinism is a condition which affects the growth of children, showing dwarfism and mental retardation. So due to defective development of early atrophy of thyroid. Atrophy मतलब degeneration. अगर बचपन में कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया या हशीमोटो डिजीज करके के ऑटो इम्यून डिजीज, इट्स ऑटो इम्यून डिजीज मतलब खुद के WBCs तुम्हारे खुद के ब्लैंड की बैंड बजाते हैं, ओके, सो दैट्स व्हाट वी से ऑटो इम्यून डिजीज, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आता है। देन कम्स myxedema, उसमें कंडीशन दैट अफेक्ट्स द एडल्ट, thyroid does not function properly, the person becomes sluggish with swelling of the face, hands, फेस नहीं दिखता है तो फेस में भी होता है, ओके। Then oversecretion पे hypothyroidism, excess of thyroxine secretion may also cause a kind of goiter called as exophthalmic goiter. वहाँ पे person suffering from this protrusion of eyes, formation of goiter in the neck, ये दो मेन है। उसके बाद a marked increase in the metabolic rate, rapid heartbeat and shortness of breath. अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई हुआ तो क्या और आपका मेटाबॉलिज्म कम हुआ तो क्या? बॉडी गेन वेट नहीं करता,
और फिर अगर मेटाबॉलिज्म कम हुआ तो फिर you will begin या अगर मेटाबॉलिज्म कम हुआ तो ऐसा, अगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा है तो ऐसा। ठीक है, अरे पतली हो तो उसमें होना अच्छी बात है ना यार, इधर ऐसा करके भी उतना होगा नहीं। नेचुरली भगवान ने दिया है तो एंजॉय करो, फिर बाद में पता नहीं शादी के बाद कैसे जाएगी, है ना। फिर वापस आप भी देखोगे फोटो, इंक्लूडिंग हर आल्सो। ओके, सो गोइंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। जेंट्स में ये बहुत कम अफेक्ट करता है। और दूसरी चीज, इसका मतलब रेशियो देखा जाए तो 99% वेट गेन होता है, वेरी रेयरली वेट लॉस होता है वेट लॉस में, जैसा कई जन को ये उल्टा इफेक्ट दिखाता है जैसा, पर वो बहुत रेयर चांस। सो मेरे डैड का जीन रहता है, डैड का हमेशा पतले ही रहता है। तो थायरॉक्सिन इफेक्ट वो जेनेटिकल है, हाँ भाई, वो अलग हुआ और ये अलग हुआ। कि जेनेटिकली देयर आर सम मेनी पीपल, मतलब हम लोग कितना भी ठूसे कितना भी कुछ करें वो वैसे के वैसे ही वैसे रहेगी। नहीं है। तो पापा का आफ्टर सर्टेन एज पापा को अचानक से कम ऐसा हुआ था। वेट कम होने लगा था, हाँ, बराबर ना, आफ्टर सर्टेन एज ना। आफ्टर तू पैदा हुआ था बराबर, तो होगा ही ना। तू पैदा हो गया तो उनका वेट कम होगा ही, बढ़ेगा कैसा, कि तू जैसे नमूने को पैदा किया होगा तो उनका तो वेट कम होगा ही होगा, कि टेंशन के मारे उनको अकेला नहीं तो मैं बड़ी बहन ना, वो तो कंफर्म वेट के बेटी के लिए नहीं तेरे लिए, मैं बुढ़ापे का सहारा कैसा बनेगा अभी। Just joke about it, I think. So we go ahead with the next part. The next gland is the most important gland, pituitary. अच्छा यहाँ पे ना, जो आपने बुक नहीं लाया इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। एक थियोरी पार्ट दिया है इधर, ओके, उसके बाद एक इधर दिया हुआ और एक इधर दिया हुआ। चल, जो इधर दिया है वो इधर नहीं है, जो इधर दिया है वो इधर भी नहीं है। तो आपको एक्चुअली पढ़ना है। अच्छा तो सब पढ़ने मेन फोकस आपका ये और ये होगा। उस साइड का तो एकदम सिंपल है, मतलब वो पढ़ा नहीं पढ़ा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और मेन पार्ट जो है ना, एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन, इसमें उसका फर्दर डिवीजन दिया है। तो ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज विदाउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट्स फंक्शंस व्हिच आर देयर। और इसमें देयर आर सर्टेन टर्म्स व्हिच आर जंपिंग ऑन टू रिप्रोडक्शन चैप्टर। तो आपने को साथ में थोड़ा रिप्रोडक्शन के ऊपर टच करना, जो आपने शायद 8 में किया नहीं होगा। शायद पता नहीं उस टाइम कम से कम ऑनलाइन में वो लेक्चर तो अटेंड किए होंगे, बाकी लेक्चर अटेंड नहीं किए होंगे। नहीं मैं तो वो भी नहीं कर, वो भी नहीं कर, पहले यूट्यूब पे से बैठ के बता तन के लिखा था। So we go with the pituitary gland. Now सबसे पहला pituitary gland. Where is the location of the pituitary gland? Okay, just below the hypophysis. और वो बोलेगा okay, उसने बोला पर अधूरा था। या इट्स अ पी शेप से वो सब कुछ ठीक है, but where located in the brain, just below the hypothalamus. और ब्रेन वर्ड भी आना चाहिए। इट्स अ पी साइज स्ट्रक्चर which is present in the brain just below the gland known as hypothalamus. Pituitary gland का स्ट्रक्चर, the gland looks like this. This is the मुझे पता है तुझे क्या सोच सकता है, तो क्या नहीं सोच सकता है।
Okay, the pituitary gland is the lower part. The upper part is hypothalamus. This pituitary gland is broadly divided into three lobes: anterior lobe, posterior lobe, and intermediate lobe, median lobe. अब ध्यान से अगर देखोगे तो हमारे केस में एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब जो है ये दो ही है. We do not have a well developed intermediate lobe. So in human beings, the middle lobe is not well developed. In fact, we have a well developed anterior lobe. तो आपके इसमें interior lobe एक blue mark में दिया हुआ है, posterior lobe और anterior. तो यहाँ पे I think they are given you is anterior, यहाँ पे posterior और बीच में कैसा part दिया हुआ है, which is known as intermediate lobe, which is not developed in our case. इतना highly developed नहीं है. Okay, reason, so this lobe in the other organism is responsible for the pigmentation. हमारे में colorful pigmentation नहीं है. Okay, we have MSH, melanin stimulating hormone, जो यहाँ से आता है, which is targeting on melanin cells in the skin. But that's only one part. So इसके लिए इतना well developed. So we have only two lobes, anterior and posterior. Now, the hormones secreted by pituitary gland. Then hormones आप पढ़ लोगे, इसमें कोई problem नहीं. पर question ऐसा कभी नहीं है. Name the hormones of anterior lobe. Name the hormones of the posterior lobe. So what are the hormones secreted by the anterior lobe? The anterior lobe secretes first growth hormone. Okay, second, that is trophic hormone. अब चलन वहां पे एक बार और कुछ तो लिखा हुआ है, इधर तो करेक्शन करने बोला है. नहीं, इधर नहीं. The term trophic hormone refers to the hormone which stimulates. यहाँ पे ध्यान देना, ट्रॉपिक हार्मोन अगर आपने ये लिखा तो 0 मिलेगा. ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ये ट्रॉफिक लेवल हुआ. ट्रॉपिक हार्मोन, वहां पे ये क्लियरली लिखा हुआ है. क्या द टर्म ट्रॉपिक हार्मोन refers to such hormones similar to the glands and सर कितने मार्क्स डिडक्ट करते हैं? गया नहीं हुआ, रॉन्ग ही हुआ. डायग्राम में बट डायग्राम नहीं, तुमने अगर थायरोट्रॉपिक लिखा और स्पेलिंग ये लिख दिया तो रॉन्ग हो गया. सो ट्रॉपिक हार्मोन इज अ हार्मोन secreted by the pituitary gland. Third hormone secreted by them is the prolactin. The posterior gland secretes ADH. कहाँ पे पढ़ा था? Antidiuretic hormone, also known as vasopressin. And the last hormone secreted is oxytocin. अब चलन इनमें से जो सबसे ज्यादा टारगेट किया जाएगा वो है सेकेंड हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन. स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए तो नहीं, पर ट्रॉपिक हार्मोन का दूसरा नाम है स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिख सकते हैं. अच्छा, इसके लिए नाम करते हैं. कई जगह पे होते तो कई जगह पे नहीं. व्हाट इज स्टिमुलेटिंग हार्मोन? देन दिस हार्मोन विल टारगेट द अदर ग्लैंड्स. तो उस अदर ग्लैंड में गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. गोनाडोट्रोपिन में एफएसएच, एलएच, एफएसएच मेल, एफएसएच फीमेल, LH male, LH female. Thyrotropic hormone, pancreotropic hormone,
adrenocorticotropic hormones. Is a son bad? अभी नहीं बोर हो रहा है मुझे काम धंधा नहीं अच्छा ऐसे छुट्टी पे आ गया मैं यहाँ पे बोल रही मुझे तो सही बोलता नहीं हाँ ये सब कर क्या तो दोनों बात होंगे चल इजी है सबसे पहला अपन फोकस करेंगे वो है ग्रोथ हार्मोन अनदर नेम फॉर ग्रोथ हार्मोन another name for glucagon the hormone secreted by delta cell somatostatin somatotropin growth hormone also known as somatotropin okay tropin what is the target hormone what is the function of growth hormone increase of height help in the growth and development of bones and muscles so target organ is the ends of the bones and muscles so the first we are studying is growth hormone mein the target organ is bones as well as muscles so it targets the ends of the bones and muscles helps in the growth and development of the bones and muscles. If it is less, if it is more, then what? So if it is less in the children, it results into a condition known as dwarfism. Okay, but if it is more in children, okay, then it is known as gigantism. But if it is more in adults, then we say it as acromegaly. Now, what is acromegaly? So we'll go one by one. Then अगर कम हुआ तो ये बच्चों में dwarfism come due to early atrophy or damage or whatever reason. तो इसके वजह से हार्मोन की प्रोडक्शन कम हुई there it leads to पहले भी आया so dwarfism now then इनमें to a extent we can take care initially अभी तो क्या करते हैं initially so we can now give hormonal injections ताकि एकदम भी कम हाइट ना आए somewhat it would increase okay gigantism में कुछ नहीं कर सकते इसको कोई ऑप्शन ही नहीं है but the person will grow beyond a certain limit मतलब ये 7-8 फुट तक जाएगा I think nourishment with 8 and 9 हो जाएगा now then इस केस में हाइट तो बढ़ गया ना अच्छी बात है ना too much increase in height has lot of its own problems ऐसा नहीं कि क्या हाइट बढ़ा तो अच्छी बात है there is a curvature in the vertebral column तो हम करने के चांसेस है कि बोन्स के ऊपर प्रेशर गिर रहा है बहुत कुछ और उसके साथ अफेक्ट होता है so that's gigantism but अगर adults like मेरे केस में now my height is not going to increase nor my height is going to decrease ऐसा बोलना नहीं होगा और बढ़ने वाला भी नहीं but now if there is a problem in my pituitary gland specifically growth hormone and there is increase in this growth hormone I would be affected with this acromegaly now what is acromegaly there is an increase in the jawline at the same time nose or your fingers hands etc adi manav khali is an example of this आपने देखा खली का चेहरा का आदि होता है ये ऐसा पूरा बुखारेगा मतलब आपका पूरा फेस जो है वो ऐसा एक की तरह दिखाएगा and that is known as acromegaly okay increase in the growth of the bone size specifically in the fingers or in the jawline or the toes itself सर abnormal होता है
अगर तू आदि मानव की तरह दिखेगा तो तुझे कौन शादी करेगा? वैसे भी कोई नहीं। नहीं, मैं तेरे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे तुम लोग के बारे में ये डाउट है तो तुम्हारा फ्यूचर कुछ नहीं बना तो वैसे गर्ल्स आर स्मार्टर। आजकल वो ये नहीं देखती, आजकल ये देखा जाता है। तो कमाएगा नहीं पीक बिल डालेगा इन शॉर्ट। अरे हॉस्पिटल बनाया एयरपोर्ट का काम कर रहा है। क्या तेरा प्लान भी यही लगता है? हाँ तेरा प्लान भी यही है क्या? सजेशन दे रहे हो अगर नहीं हुआ तो हाँ बस अच्छा दोनों साथ में, हाँ ऐसे दोनों साथ में। बिजनेस चलता है हाँ तब तक के लीगलाइज हो गया। लोग क्या करें टीचर अगर सामने करते हैं यहाँ पे Okay, so acromegaly. अरे रहने तू वो एक्चुअली क्या क्या So that about the first part growth hormone. अब उसके बाद आता है the next one is tropic hormone. अब चल फर्स्ट पार्ट बुक में जहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखा है वहां पे पहले और लिखा है ग्रोथ हार्मोन, सिर्फ बेसिक दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद डेफिशिएंसी लिखा है और ये लिखा हुआ है। उसके बाद ओवर सिक्रेशन में एडल्ट में एक्रोमेगाली लिखा है। देन दे आर जस्ट गिवन यू द नेम्स, वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। दे आर गिवन यू थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आल्सो नोन एज थायरोट्रोपिक हार्मोन। Then they given you is gonad stimulating hormone or gonadotropic hormone, and third adrenocorticotropic hormone. Now, just to make it very simple, then just like book है, book में सब कुछ cover नहीं किया, they have selected the part. अब पहला ट्रॉपिक हार्मोन का बेसिक फंक्शन देखें तो आपको समझ में आएगा क्या मतलब। ट्रॉपिक हार्मोन is a regulating hormone. It's a stimulating hormone. It will target various endocrine glands of the body, except hypothalamus. That's why pituitary gland is known as master gland, and hypothalamus is known as master of master gland. Okay. For our consultation scenario mein, you sitting over here are all endocrine glands, simple endocrine gland, pancreas, what we say as thyroxine, adrenal, testes, ovaries. Yeah, I am controlling you right now. So I am pituitary, but myself is under the control of Anubhav. Okay. So hypothalamus. So Anubhav will be referred as hypothalamus. Indirectly, I will be controlling he is indirectly controlling you through me. So I am the pituitary. Can you control me? No. Can I control Anubhav, sir? No. So that's the relation over here. The master gland, that is the pituitary, secretes a tropic hormone which will stimulate all other endocrine glands to secrete their hormones, but will not control hypothalamus. So उनका target organ बाकी होगा पर hypothalamus नहीं, and that is why the name alternative name is stimulating. मतलब जब तक ये हार्मोन थायराइड या पैराथायराइड या पैंक्रियास या टेस्टिस या ओवरीज या एड्रिनल ग्लैंड पे जाके बोलेगा नहीं कि भाई तू अपने हार्मोन रिलीज कर, तब तक they will not secrete their hormones. That is why they are referred as tropic or stimulating. समझ में आया? अब अगर ये समझ में आ गया तो सिंपल है। चलो अपने सिलेबस में अपन कितने ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं? एड्रिनल पढ़ रहे हैं, थायराइड पढ़ रहे, पिट्यूटरी छोड़ दो, और पैनक्रियास। रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप टेस्टिस एंड ओवरीज पढ़ोगे। तो
अब थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, पैंक्रियाज है, टेस्टिस है, ओवरीज है। तो हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड लिख दिया मैंने, तो पिट्यूटरी हर एक को कंट्रोल करेगा। सो व्हेन इट कंट्रोल्स एड्रिनल, वी से इट एज एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब तक ये हार्मोन यहाँ पे टारगेट नहीं करेगा, उसका कॉर्टेक्स सिक्रेट नहीं कर पाएगा। Which is the hormone secreted by the cortex? The glucocorticoids, mineralocorticoids, वो सब कहीं ना कहीं एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन से कंट्रोल किया। देन इसी से आएगा थायराइड, थायरोट्रॉपिक हार्मोन, या ऑल्सो नोन एज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैंने यहाँ पे लिखा था, क्या मैं बताते हो? सॉरी, यहाँ पे लिखा है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब तक ये टारगेट नहीं करेगा, थायराइड ग्लैंड अफेक्ट नहीं होगा। तो जिनको गॉइटर का प्रॉब्लम होता है या कुछ प्रॉब्लम है थायरॉक्सिन का, कभी कभार ये हार्मोन प्रॉपर है पर TSH में प्रॉब्लम है, इसलिए TSH को भी चेक किया जाता है। बिकॉज प्रॉब्लम इधर नहीं है, इसलिए ना घर पे पानी नहीं आ रहा है, ठीक, पर अपन देख रहे हैं पानी का प्रॉब्लम इधर नहीं है, अपने मेन टाकी में कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए आपने घर पे पानी नहीं। तो ऐसे है, TSH में प्रॉब्लम है, इसके लिए यहाँ पे आता है। Okay, so that can be another condition. So thyroid stimulating hormone या thyrotropic hormone. Then comes pancreas, pancreotropic hormone. ये आपको नहीं दिया है, it's not required for us. फिर आता है, the next one was testes and ovaries. तो testes और ovaries को combine बोलते हैं अपन gonads. We say gonads. The reproductive organs are referred as gonads. तो pituitary इनको टारगेट करेगा ही करेगा. So there we say it secretes gonadotropin hormone. Okay, so gonadotropin hormone is nothing but targeting gonads. अब इसमें चलिए इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने की, ये वन लाइन ही है क्या, it is targeting thyroid to stimulate its hormone, it's targeting adrenal to stimulate its hormone, pancreas its hormone वगैरह। प्रॉब्लम किधर है इस पार्ट? when I say gonads, gonads क्या है? testes and ovaries। तो अब testes में और ovaries में what are they doing? gonadotropin hormone के कैटेगरी दी है, सब कैटेगरी। there are further made up of FSH and LH। so what is FSH? follicle stimulating hormone, and what is LH? luteinizing hormone। Okay, we continue next time with the FSH and LH part। क्या बात कर रहे हो? Thank you। FSH and LH। Now, then what is follicle stimulating hormone? अगर आप देखोगे follicle stimulating hormone में यहाँ पे टारगेट है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, luteinizing में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना, बुक में कुछ टर्म्स दिए जो आपको सिलेबस में अभी नहीं है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में, और ये टर्म्स बुक में स्टार्टिंग में नहीं दिए, दे आर गिवन यू इन द टेबल फॉर्म। अब टेबल में भी अलग अलग जगह पे दिया हो, तो अगर आप फर्स्ट पार्ट रखते हो, फर्स्ट टेबल जो दिया है FSH स्टिमुलेट्स एग फॉर्मेशन इन फीमेल। आई होप सबको समझ में आता है, एग फॉर्मेशन फीमेल्स में ही हो सकता है, एंड स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल्स। इन शॉर्ट क्या कर रहा है FSH? फॉलिकल का मतलब है यहाँ पे द गोनाड्स के गैमेट्स। तो फीमेल्स में आई होप ओवरीज में आपने पढ़ा होगा, देयर इज समथिंग नोन एज प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन। ठीक है, फीमेल्स में द फॉर्मेशन ऑफ द एग, मेल्स में फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स। अब luteinizing hormone में stimulate the formation of corpus luteum, सुना है?
to produce the female hormone progesterone and the testis to produce the male hormone testosterone. अब इस तरफ अगर देखोगे सेकेंड टेबल में तो follicle stimulating hormone में in females growth of graphical follicles and estrogen secretion, in males में spermatogenesis, luteinizing में in females ovulation, maintenance of corpus luteum and secretion of progesterone, males में in males testosterone secretion. इस साइड में ऑलमोस्ट सेम लिखा है, सिर्फ एडिशनली आपको वो जो पढ़ना है इस ग्राफियन फॉलिकल. तो इसमें चिल्ड्रन आई वुड बी एक्सप्लेनिंग द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. यहाँ पे रिप्रोडक्शन में मैं थोड़ा कम पढ़ूंगा, सो मैं विल बी कवरिंग सम पार्ट इन दिस पार्ट ओनली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्राफियन फॉलिकल, व्हाट इज ओव्यूलेशन, व्हाट इज प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, द स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये सब टर्म्स जो आप रिप्रोडक्शन में पढ़ने वाले हो मैं यहाँ पे करूँगा. Is it clear to everybody? Yes, sir. So we first go with the follicle stimulating में सिर्फ अभी फिलहाल जाते हैं मेल्स के. मेल में the follicle stimulating हार्मोन जो है वो टारगेट करेगा टेस्टिस. टेस्टिस में it will target in formation of sperms by a process known as spermatogenesis. Okay, so spermato मतलब sperm, genesis मतलब formation. So it helps in the spermatogenesis of the sperm. अब males में ज़्यादा कुछ पढ़ने से है नहीं. LH in the males produces target organ. क्या फंक्शन दिया है? Helps in the formation of testosterone. वहां पे लिखा है देखो LH में नीचे वाले पार्ट में in males testosterone secretion. अब चिल्ड्रन कोरिलेशन देखना. LH कहाँ से सिक्रेट होगा? पिट्यूटरी से. पिट्यूटरी से कहाँ पे टारगेट करेगा? टेस्टिस. टेस्टिस में इंटरनल स्ट्रक्चर में there is something known as Leydig cells. Leydig cell पे टारगेट करेगा. This Leydig cell in turn produces testosterone, which in turn will target the structural unit of testis to produce sperm. तो वो साइकिल पार्टनर. ठीक है, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे. तुम लोग को पता नहीं था क्या लेक्चर आज है मेरा? अरे सर ये यहाँ पर आके पता चला कि अच्छा पाएंगे. तुम लोग चेक नहीं करते हो. एक हफ्ते पहले चेक किया गया. तो अभी सैटरडे को केमिस्ट्री करेगा. अरे आज इसके दिन भी सैटरडे को ये अरे कब छुट्टी
मैं इसमें कुछ बच्चे लाओ आगे वो इसमें को बताया नहीं ये बस एक अटैक पूरा करना हाँ देखिए मैं वो बाद में क्या करना नहीं माइंड really good. No international. Don't tell me organic present. See, You right? There's nothing called as friend. It's you, right? It's you, the person is you, your friend is you. I'm sure about that. I'm so why not? right. You're right. बेचारा कुछ समझता है हम क्या बात कर रहे हैं अरे दिखाना बिरयानी की बिल्कुल है चलो सॉरी इधर एक picture of my स्नैपचैट पे चलाने के लिए yes, I ask now. What? How are you? Yes, हाँ, अगर yes, yes. ऐसे जल्दी है बोल रहा था कभी हो गया मैंने और चीज है नहीं क्या होता है See, I did good. कितनी Plot and pitch, common and this writer that once जैसे किसने किया why would I सच में अरे यार इस friend is telling to me start the guy yeah if I had